Chalo. So yesterday we have completed up to I think misstatement, right? Now what do you understand by the term called overall audit strategy? देखो कल मैंने तुम्हें तीन words बताए थे, planning, strategy, program. What did I tell you? कि planning and strategy we do before entering into the whose place? Client's place. And when the planning and strategy is bigger one, you put it in writing, right or not? And that becomes your what? Program. So now planning we already understood. Now we have to understand what do you mean by overall audit strategy. देखो बहुत simple सी बात है. The strategy includes about your engagement team. Strategy is all about, let's say for example, I will ask you a very simple question you will understand. Suppose I am doing the audit of one local company in India and I am doing the audit of one listed company in India, say for example Reliance. उन दोनों के केस में my engagement team का size will remain same or will be different? Where I need a bigger team? Reliance, of course, क्योंकि that's a huge elephant company. And where do I need a smaller size team? Local company called ABC Limited. Am I correct? So audit strategy is all about thinking about your what? Resources. So you have to think about your engagement team, how many professionals you need, how many experts you need, how many paid assistants you need, how many articles. Articles may be junior articles and senior. All that when you think about your resources, who will do what work at what time, allocation of the work to them, timing of the audit if you will tell to them, all that becomes a part and parcel of what? Strategy. Let me tell you the practical example how we do it. जैसे say for example मेरे को एक audit आया. अब मान लो मेरे को अपने क्लाइंट का इन्वेंट्री चेक करना है. क्या चेक करना है? इन्वेंट्री. अब मेरे को ये बताओ इन्वेंट्री वैल्यूएशन व्हाट इज द बेस्ट डेट ऑफ डूइंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन? इज इट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर और द बैलेंस शीट डेट? बैलेंस शीट है. और AS2 क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और NRV विच एवर इज लोअर. तो वी कांट डू द इन्वेंट्री वैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर. वी हैव टू डू द इन्वेंट्री वैल्यूएशन ओनली ऑन द विच डेट? Balance sheet date. Am I correct or not? So this timing of doing the audit, deciding the resources. So where I will put my more experienced staff on the risky areas or the less risky areas, and less experienced staff on the less risky areas. So that decision when you take, that is called strategy. Are you getting the point? Because our ultimate goal is to express an opinion on the financial statements and cost statement. But to reach to the goal, you have to do a lot of thinking about your resources. किसको कौन सा काम देना है? Please tell me if there is a statutory obligations area, should I allocate that work to my junior articles or senior articles? Senior, because I can't take the chance by giving the heavy work to my junior articles because they are in the year 1, so they are in the learning process. The one who is in the year 3 obviously has more experience as compared to the articles who is in year 1. So obviously the more statutory areas I'll give it to whom? The senior articles as compared to junior. That is called overall audit strategy. Now read what is overall audit strategy. Overall audit strategy is all about setting your what? Scope. Means your boundaries. Who can do what? Second thing is what? Timing. When to do what work by whom? That is called timing. And what is the last thing? Direction. Supervising your team. तो व्हाट इज इसे बोलते जैसे प्लानिंग में मैंने तुम्हें 3 वर्ड बताए थे यस्टरडे. TEE. टाइमली, efficiently, effectively. यहाँ पे आप वर्ड याद कर लो STD. What is STD? Scope, timing, direction of your what? Of the audit and the development. It also guides the development of which plan? Detailed audit. What do you mean by detailed? Putting it in what? Writing. देखो, I cannot just simply tell you do this. I have to put it in writing what I instructions have given to you. क्योंकि you never know. Let's say for example, ये मेरी articles है. मैंने इसको क्या बोला? Madam, go and check the TDS today. So she went over there and checked the sales instead of what? TDS. Next day when I asked her, where is the TDS report? I told you yesterday. She said that, sir, you told me to check sales. Can I fix the responsibility when it is orally instructed? No. So it's better that whatever the instructions you give to your staff, put it in a which manner? Writing form. उसे हम लोग बोलते हैं audit program. What do we call it as? आप instructions written में दोगे तो you can fix the responsibility of the person who is doing the wrong thing or the right thing. Are you getting the point? So planning and strategy, when you put it on a piece of paper, it turns into a what? Program. Now, what do you mean by risk assessment? Risk assessment, do you remember yesterday I told you RAPS and FAPS? What is RAPS and FAPS? Risk assessment procedures and further audit procedure. RAPS से अपने को क्या पता चलता है? ROMUM. What is ROMUM? Risk of. If the ROMUM is high,
तो what will be my FAPS? Will be tighter or will be lenient? Which will it be more stricter or will it be more lenient? Stricter. And if the ROMOM level is less, it will be lenient. तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट. बट द क्वेश्चन अराइजेस, सर रिस्क असेसमेंट होता कैसे है? रिमेंबर, you have to learn your client, that is called entity. You have to learn your client's environment, means PESEL. You have to learn your client's inside, that is called internal control system. And you should learn your client's accounting system and client's bookkeeping system. If you will gather these 5 knowledges, then only you can understand the ROMUM level in your client's place. Which level? ROMUM level. So risk assessment is not that ki risk will come to you and will tell that, hey, I am risk. No, you have to identify the risk. तो आपको क्लाइंट का स्वॉट करना पड़ेगा. व्हाट इज स्वॉट? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अब मेरे को ये बताओ, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हाउ यू विल कम टू नो? फ्रॉम इनसाइड और फ्रॉम आउटसाइड? इनसाइड. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर इंटरनल एनवायरनमेंट. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर व्हाट? एक्सटर्नल. उसके लिए आपको पेसल चाहिए. व्हाट इज पेसल? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लॉफुल एंड सोशियो कल्चरल. तो यू शुड नो. जैसे से फॉर एग्जांपल, दिस इज योर क्लाइंट, राइट? ठीक है, दिस इज क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दिस इज क्लाइंट्स एनवायरनमेंट. तो आपको क्लाइंट के एनवायरनमेंट का नॉलेज होना चाहिए. You should have the knowledge of clients which system? Internal control system. You should have the knowledge of clients accounting system plus bookkeeping system. With this, and obviously you should have the knowledge of clients business. So if you will acquire these 5 knowledges, you will be able to do what? Risk assessment. अब जैसे मैं तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, what are the risks of doing a jewelry business? सोच के देखो. Identify the risks which are faced by the jewelry business. The biggest risk is theft. उसके लिए ज्वेलरी बिजनेस में क्या, व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? कैमरास इंस्टॉल होते हैं, क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड भी होता है. व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ बैंक? सेम, थेफ्ट. बैंक में लॉकर सर्विस होती है. अच्छा ये बताओ, लॉकर सर्विस कैन बी ऑपरेटेड बाय द कस्टमर, कैन बी ऑपरेटेड बाय द मैनेजर, और बोथ ऑफ देम टुगेदर? क्योंकि देयर आर 2 कीज फॉर द लॉकर, वन इज विद द कस्टमर एंड वन इज विद व्हाट? दैट इज बैंक्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ICS, BKS and AS. What is BKS? Bookkeeping system, accounting system, internal control system, environment, and the business. Every business has different 5 things. So if you really want to know the risk assessment of one of your client, you have to understand these 5 things. You need to have the knowledge of these 5 things. Else you will never be able to understand कि what are the risks associated with your client's business. जैसे let's say for example, what are the risks associated with the insurance company? आप इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, मान लो आपको LIC का ऑडिट आया. LIC का रिस्क बताओ. LIC का सबसे बड़ा रिस्क होता है क्लेम्स, रॉन्ग क्लेम्स. विच क्लेम्स? रॉन्ग क्लेम्स. जहां पे जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, नॉमिनेशन इज वन ऑफ द एरिया वेयर द इंश्योरेंस कंपनीज हैज टू बी वेरी मच लाइक हैविंग द ग्रेटेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. व्हाई? क्योंकि LIC का मेन बेनिफिट, द पर्सन हु हैज टेकन द इंश्योरेंस, दैट पर्सन डज नॉट गेट. हु गेट्स द मेन बेनिफिट ऑफ LIC? आफ्टर हिज फैमिली, द नॉमिनी. तो नॉमिनी के केस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी स्ट्रिक्टेस्ट और शुड बी द लीनियंट वन, स्ट्रिक्टेस्ट वन. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस का नेचर होता है ना, अकॉर्डिंगली उसके बिजनेस रिस्क भी डिफरेंट होते हैं. तो फॉर एवरी बिजनेस व्हेन यू डू द ऑडिट, यू नीड टू हैव द नॉलेज एंड यू नीड टू असेस देयर रिस्क प्रोफाइल. दैट इज नोन एज रिस्क असेसमेंट. नाउ रीड दिस पॉइंट. द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, understanding of its environment, understanding of its internal control, to identify and ROMUM, to identify and assess the ROMUM. What is ROMUM? Risk of material misstatement, which can be either fraud or error at overall cost statement level and at the which level? Assertion level, including the items of cost, cost heads and disclosure thereof. So same thing what a chartered accountant does for his client, सेम थिंग अ प्रैक्टिसिंग CMA हैज टू डज फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट. वहां पे हम लोग रोमम चेक करते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से. यहां पे आप रोमम चेक करोगे फ्रॉम द कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स इट. कि वेदर द क्लाइंट हैज गिवन द राइट हेड फॉर द राइट कॉस्ट और नॉट. जैसे से फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग कॉस्ट कहां पे आनी चाहिए? शुड इट बिकम द पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट और शुड इट बिकम द पार्ट ऑफ योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड?
हमें पता है मार्केटिंग कहाँ पे आनी चाहिए. वी शुड नो दैट कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है. वी शुड नो दैट कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है. तो सेम थिंग व्हाट अ सीए डज फॉर हिज फाइनेंशियल ऑडिट, सेम थिंग व्हाट द सीएमए डज फॉर हिज cost audit. But that is what we learned in the beginning. Ki whether you are doing a financial audit or you are doing a cost audit, your planning, strategy, program, risk assessment, everything will remain same. यहाँ पे मेरे को रिलायंस का AKOC भी करना है, आपको वहां पे वाइजैक का AKOC भी करना है. But we both have to do common thing is what? AKOCB, acquiring the knowledge of client's business. So that is how you understand every client's risk by doing the which assessment? Risk assessment. Next one, requirement. Prior to the entering the planning phase, the cost auditor shall ensure that appointment as cost auditor is proper and he has received the letter of appointment and the legal formalities regarding his appointment have been complied with. Now I will ask you a very simple question which you already know. Tell me the 4 things you do before accepting the appointment letter. Do you remember that? हमने कंपनी ऑडिट में किया है. First thing, declaring that I am qualified, declaring that I am not disqualified, declaring that I am doing the audit within my ceiling limit. I understand the terms and condition, and neither me nor my partner nor my firm have any criminal or civil case in India or outside India. Why do we do that? So that we can accept the which letter? Appointment letter. That is what they are saying. Read the point number 1 again. Prior to entering the which phase? प्लानिंग फेज से भी पहले आपको क्या करना है? यू नीड टू इंश्योर दैट कि अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इज व्हाट? प्रॉपर, एंड ही हैज रिसीव्ड द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द लीगल फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन कंप्लाइड विद. नेक्स्ट पॉइंट, ethical requirements as per the regulation continues to be satisfied. If I am not wrong, we have done the professional ethics chapter. Please tell me the 5 ethical requirements: integrity, objectivity, confidentiality, professional due care, and professional behavior. All these 5 you have to maintain either you are a practicing CA or you are a practicing CMA. मैंने तुम्हें बताया था कि same chapter we have in what? CA final auditing also. So what 29 clauses we have done in the professional ethics, that same 29 clauses plus 5 extra are there in CA Act also. तो ये CA Act, CMA Act और CS Act, you will see that they are very much near to each other. ये सब बहुत नियर बने थे. जैसे CA Act 1949 है, CMA Act 1959 है. But being a professional, what CA has to perform, same things are applicable on whom? CMA. तो भैया जो मेरे ethical requirements होंगे वो आपके भी होंगे. So this is what the point number 1 prior to the planning phase. Next one, an understanding of the terms of what? Reference, including the units to be covered, products and services to be covered, and scope of your coverage. Acha, please tell me, suppose if the Vizag steel plant is hiring you for doing its audit, will you just accept the audit or you will make some inquiries? You will make some inquiries. What is the inquiry number 1? How many units I have to cover? आप मेरे को एक हेड ऑफिस का ऑडिट दे रहे हो या हेड ऑफिस प्लस ब्रांचेस का ऑडिट? हाउ मेनी यूनिट्स आई हैव टू कवर? सेकंड वन, what products and services I am going to cover? Are you giving me the audit of full costing or are you giving me the audit for some of your products and some of your services? And what is the third one? What is the scope of my coverage? What I can do, what I can't do, means my Lakshman Rekha. Am I correct? Lakshman Rekha means what? Which you can cross or can't cross. That is called your scope. So what are the 3 things you have to ask your client? What is my units to be covered? What is my products and services to be covered? And what is my overall scope? After that, you will discuss everything what you have done with your which partner? Audit partner, and other key members of what? Audit team shall be involved in what? Planning. Shall be involved including planning and participating in what? Discussion among the audit team members. अच्छा मेरे को ये बताओ, do you do the audit alone or along with the team? So what planning you have in your mind, don't you think that you should discuss it with your team members? Yes. और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, when you will also get qualified ना, 90% of the times you won't do the audit. You will get it done by your what? Articles. So who should have the more clarity of planning and strategy? The one who is sitting in the office or the one who is doing the audit? तो कौन हो कर रहा ऑडिट? टीम मेंबर्स. आर यू गेटिंग इट? तो इट मींस इंस्टेड ऑफ एनी अप्रोच यू शुड हैव अ participative approach. What do you mean by participative? Make them feel कि they are the part of the organization. क्योंकि if you will just tell them the plan ना, they will think like कि okay, I am a servant and he is my master.
But if you will make them participate in the plan, what they will think? Ki we are the part of planning. I have also contributed a little bit in more planning. Where you will be more motivated? When you are participating or when you are being told participating. So that's what they are saying. Read this point again. Audit partner and the other key members of the audit team shall be involved in what? Planning. They should be involved, including planning and participating in the discussion among the which members? Team members. Are you understanding every line? Next point क्या है? Cost auditor shall formulate overall audit strategy that sets the STD. What is STD again? Scope, timing, direction of the and overall audit strategy guide and developments of the audit plan includes the following. What are the factors? चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. Please tell me your program is based upon so many factors. उसमें से please read the factor number 1 and please tell me how it affects your strategy. Read the point number 1. Results of the which activity? Let's say for example you are about to get the appointment letter on Monday. Suppose आपको Monday को appointment letter मिल जाएगा. But today you are sitting with the MD of the Vizag steel plant. आप उससे discussion कर रहे हो. Sir, how many units you have? What is your payment criteria? Where do you buy the resource? And he is keeping silence. What does that mean? Is he helpful or not helpful? तो मेरे को ये बताओ, what your approach is going to be after getting the appointment letter? Should you expect a lot of help from the management or should you expect a least help? It means your workload increased or decreased. इसका मतलब your strategy will get affected due to the preliminary activities. Am I correct? Read the factor number 1. Results of preliminary activity does affect your what? Strategy. Factor number 1. Read the factor number 2. Knowledge from the previous audits and other engagements with auditing. मैंने क्लाइंट के पुराने ऑडिट्स के थोड़े से डॉक्यूमेंट्स निकाले. I took out some documents of the previous audit. I came to know that in the previous audit, the auditors were not happy with the client. And they pointed out so many negative things in the audit reports. Now tell me, does that also helps me in the current year strategy? Yes. It means what can happen with them? The same thing can happen with me. So should I be more careful or less careful? So my STD will get affected or not? Yes. That is a factor number 2. What is a factor number 3? Knowledge of business. मेरे को इतना पता चल गया कि मेरे क्लाइंट का बिजनेस बहुत रिस्की है. What should be my FAPs? Strict or lenient? Risk level is higher. Your FAPs also will be higher. Risk level is lower. Your FAPs will be lenient. Next one is what? Nature and scope of audit. अगर आपको सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट मिला है तो then your scope will be different. But if you got the financial as well as what cost audit, तो इसका मतलब not only the P&L and balance sheet you have to do, you also have to check its cost sheet. So it means how bigger the scope of audit is, that will bigger the size of your audit team will be. Smaller is the size of the team. It means you are doing the which audit? Smaller audit. So it means nature and scope of the audit. Next one is what? Please tell me your statutory deadline of completing the cost audit. And the entity is huge. Suppose entity is huge and deadline is 180 days. You need a smaller team or bigger team? Bigger team. So it means what are your statutory deadlines and what is your reporting format? That also affects your what? Strategy. What is the next factor? Relevant factors determining the direction of what? Audit efforts. And last one is what? Nature, timing, extent of resources required for audit. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, मैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का ऑडिट कर रहा हूं और मैं वाइजैक स्टील प्लांट का ऑडिट कर रहा हूं. वाइजैक स्टील प्लांट इज नथिंग बट द मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन एंड स्टील, बट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाट? मेडिसिन्स. कहां पे आपको एक्सपर्ट्स चाहिए? डू यू नीड एक्सपर्ट्स इन डूइंग द वाइजैक स्टील प्लांट ऑडिट? देखो मेरे ख्याल से वाइजैक स्टील प्लांट में कोई एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए. Why not required? What kind of person is an expert in iron and steel? Is there any particular profession for the same? No. आपको सिर्फ डेटा चाहिए. अगर आपको डेटा मिल गया, I think analysis you can do and you can be an expert in doing that. Maybe it may take one audit for you to learn, but from the next year audit you will be an expert. But you can never be an expert in this audit. Why? क्योंकि यहां पे अपने को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? केमिकल्स की, मेडिसिन की. Do you have that knowledge? Are you from a medical field or we are from commerce field?
कॉमर्स फील्ड। तो यहां पे आपको एक्सपर्ट चाहिए, बट यू डोंट नीड एन एक्सपर्ट वाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ, रीड द लास्ट हेडिंग, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट। ये सारे फैक्टर्स आपको प्रीलिमिनरी स्टेज में ही कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर मेकिंग योर व्हाट स्ट्रैटेजी। तो योर स्ट्रैटेजी is based upon these factors. Name the five out of all. Results of which activity? Preliminary. Results from the which audits? Previous audit. Knowledge of whose business? Client's business. Nature and scope of audit. Statutory deadlines and relevant factors determining the direction and nature, timing and extent of resources required. अब बताओ, planning strategy program is a prime responsibility of whom? Cost auditor or management? Preparation of cost statement is a prime responsibility of whom? So you do yours and they will do theirs. So read the next point. Cost auditor shall develop an audit plan. Audit plan will include the nature, extent and timing of your RAPs and FAPs. What is RAP? Risk assessment procedures. Further audit procedure. Cost auditor shall plan the nature, extent and timing of direction and supervision of the audit team members and the review of their work. अच्छा ये बताओ, suppose you are an engagement partner and you have a team of 11 members, including you 12. You told 11 what to do, what not to do. After that, you will leave them as it is or you will keep an eye on them. Ultimately, are they the one who are going to sign the audit report or you are the one? You are the one. They are the team members. They are not the auditors. So you have to do DRS on them. ये technical words है, थोड़ी याद रखना. Direction, review, supervision. What is DRS? आपको उनको टाइम टू टाइम डायरेक्शन भी देना है. यू हैव टू टाइम रिव्यू देयर वर्क एंड सुपरवाइज देम. इफ दे आर गोइंग समवेयर रॉन्ग, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट देम ऑन द राइट ट्रैक. इज इट करेक्ट? उसे हम लोग बोलते हैं डीआरएस. रीड द 5.6 पॉइंट अगेन. कॉस्ट ऑडिटर शेल प्लान द नेचर, एक्सटेंडेड टाइमिंग ऑफ व्हाट? डायरेक्शन, डी सुपरविजन एंड व्हाट? रिव्यू. तो ये याद रख लो डीआरएस पॉइंट. While making you right, I'll make you right in a proper way, not in this way. Next point. Cost auditor shall update the what? अच्छा मेरे को ये बताओ, what is the deadline of your portion they have set to you? March 31st March को सारे complete हो जाएंगे. Am I correct? I think from Monday onwards your SPME is also going to start. Maninder sir might be, maybe he might be taking it. तो मेरे को ये बताओ, तुम्हारी डेडलाइन है 31 मार्च. चलो बाय मिस्टेक या ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, सपोज इट वेंट टू 15 अप्रैल, तो यू विल लूज योर जून अटेम्प्ट और योर प्लानिंग विल चेंज. अभी आपकी प्लानिंग क्या है? चलो मार्च में पोर्शन खत्म, ठीक है, अपने पास अप्रैल मंथ है, मई मंथ है, हाफ ऑफ द जून मंथ है. तो 2.5 months में I'll make sure that कि I will do the preparation in this way. तो आपने एक प्लानिंग बना के रखी होगी. But please tell me, is planning should be rigid or planning should be flexible? You never know where the unexpected events may happen. The same thing happens in audit also. Audit में जो भी अपन planning, whatever the strategies, whatever the programs we make, that we make before entering to the whose place? Client's place. But when we actually enters into the client's place, our planning, strategy and program may change. So you should never make a rigid plans. You should always have a what? Flexible plan. Let's say for example, तुम वाइजैक स्टील प्लांट का मस्त प्लानिंग स्ट्रेटेजी करके गए. When you entered it, you came to know that income tax raid has happened and all the books and cost records have been seized by income tax department. Now please tell me, can you complete your audit on time now? Or you have to wait for the income tax department to return the books? So your timing is now going to complete your audit on time or your timings will change. Always remember there's a high scope that your planning, strategy and program may change when you actually do the audit. So you should have a flexible planning and strategy instead of rigid one. Read this point, 5.7. The cost auditor shall update the overall audit strategy and overall audit plan as required during when? The course of an audit. अगर audit करते करते जरूरत पड़ेगी तो you have to change your what? Planning and strategy. So don't make a rigid plan and strategy. Always you should have a scope of improvement. Next one. Cost auditor shall what? Document. What did I tell you? Your planning and strategy should be here or should be here as well as on a piece of paper. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Document. Cost auditor shall document the overall audit strategy, overall audit plan and any
significant changes made therein during the audit engagement and the reasons for changes. अब मैं ध्यान से सुनना, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको चार चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए. You should document your planning, you should document your strategy, you should document your changes in planning and strategy, and you should also document your reasons of changes. My question is why? हमें ये चारों चीजें डॉक्यूमेंट क्यों करनी चाहिए? You should document it, yes, because next year you may be appointed as an auditor again, but hopefully next year you might not be knowing what you did last year. तो आप लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स को ओपन करोगे, यू विल सी व्हाट वाज योर प्लानिंग लास्ट ईयर, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी लास्ट ईयर, व्हाई डिड यू ब्रिंग द चेंजेस एंड व्हाट वर द रीजंस ऑफ चेंजेस. विल इट हेल्प यू इन योर फ्यूचर ऑडिट्स और नॉट? यस. इसलिए बोल रहा है कि चारों चीजों को रिकॉर्ड करके रखो. आपने क्या प्लान किया था, क्या स्ट्रेटेजाइज किया था, एंड व्हाई यू ब्रॉट सम चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस यू ब्रॉट, so that next year in the you will do the audit, it will be helpful to you. That is why एक rule याद कर लो, whatever you communicate with your client, whatever you collect from your client, whatever you respond to your client, put it in writing. उसी को तो audit documentation file बोलते हैं. What do we call it as? Audit, which you have to preserve for how many years? 10 years. क्योंकि what may happen on you? Peer review. इंस्टीट्यूट में कंडक्ट द peer review on you, और अगर आपका peer review का नेगेटिव रिजल्ट आया तो देन योर केस विल बी गोइंग टू द बीओडी. याद आ रहे हैं? प्रोफेशनल एथिक्स हमने दो अथॉरिटीज करी थी, बीओडी, डीसी. विच केसेस गोज टू द बीओडी? मिसकंडक्ट रिलेटिंग टू शेड्यूल 1 goes to whom? BOD. Which cases go to DC, disciplinary committee? Schedule 2 or both? Who is most strict? DC. क्योंकि he may reprimand you, he may cancel your membership and COP permanently, and he may also impose the penalty up to rupees 5 lakhs. याद है मैंने चार्ट लिखवाया था? तो according to that, remember everything is connected. It's not that कि these kind of cases will not be, क्योंकि this all is a part of your practice. और मैंने तुम्हें पहले बताया था schedule 2 is more inclined towards your what? Practice. Can I say that? अच्छा, let's say simply example, you did not document it. Does that show it your clause 7 of part 1 of schedule 2? Gross negligence. तो जो आपने standard ने बोला है and you are not doing it, it means you are following the things or you are not following. तो you are simply a case of what? Gross negligence. तो if you are falling under guilty under schedule 2, where your case will go? DC. What DC can do? Reprimand you, cancel your membership, impose. ये सब connected है. इसीलिए आपको क्यों डॉक्यूमेंट करना है? क्योंकि आपको 10 साल तक प्रिजर्व करना है. क्यों 10 साल तक प्रिजर्व करना है? क्योंकि पीयर रिव्यू होगा. पीयर रिव्यू में वो क्या चेक करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन. और अगर उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिले तो दे विल सेंड योर केस टू व्हाट? डीसी. व्हाट इज डीसी? डिसिप्लिनरी कमेटी. अगर शेड्यूल 1 का हुआ तो बीओडी और शेड्यूल 2 का हुआ तो डीसी. एंड डू यू वांट टू गेट रिप्रीमेंडेड और कैंसल्ड? तुम 6 साल इतनी मेहनत से, 5 साल इतनी मेहनत से सीएमए बनते हो, and I don't think so that just by doing this silly mistake you would like to get yourself permanently disabled from doing the practice. Am I correct? So everything is connected. Each and every chapter में connection I will develop so that you can understand it कि why one chapter is connected with the another. What is the last one? Sorry. In the initial audit, cost auditor shall perform procedures regarding the acceptance of client relationship and specific audit. Let me give you an example. One of your relative is working as an MD in the client's company. Suppose आपको वाइजैक का ऑडिट आया और वाइजैक स्टील प्लांट में आपका ओन ब्रदर is working as an MD. Should you accept or you should not accept? Why you should not accept? Because you will not be unbiased and impartial. You will definitely will get what? Biased and partial. The reason, your objectivity will get compromised. So read the point again. In the which stage? Initial audit. Cost auditors shall perform procedures regarding acceptance of client relationship and the specific audit. आपको शुरू में ही चेक कर लेना है कि अच्छा, will your answer change if your brother is not a MD, he is an employee? Now in that case you continue, क्योंकि employee never participates in management. MD participates in management, क्योंकि MD में M only stands for what? Managing director. So he is a KMP. But if your brother is a what? Employee.
you may continue the client relationship. And in case where the audit of the entity for the prior period was conducted by the which one, मैंने आपको पहले भी बताया था, the new auditor may communicate with the old auditor or must communicate. Why the communication is must? Because what has happened with the which auditor? देखो सर, why previous auditor is not reappointed again? इसका क्वेश्चन बताओ. There can be so many possibilities. Possibility number one, he didn't do the work properly. Or say for example, he didn't get his fees. That's why he thought, why should I do the same mistake again? Don't you think that as a new auditor, you should know all this? So that's why the new auditor must communicate with the which auditor. So in case the last year audit was done by the different audit firm, the auditor shall what? Communicate with the which auditor? Previous audit. ये भी हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा था. So all these chapters what we are doing are interconnected with each other. Now application of guidance, ये ओके अच्छा, ये ऊपर जो हमने अभी जो पढ़ा है उसको दोबारा से नीचे क्या किया गया, रिपीट किया गया. व्हाट वी हैव लर्नड इज व्हाट द ऑडिटर शुड डू एंड व्हाट दे आर सेइंग कि व्हाट यू शुड डू आफ्टर डिसीजन हैज बीन टेकन. रीड द फर्स्ट वन. एप्लीकेशन गाइडेंस, द नेचर, एक्सटेंट एंड प्लानिंग एक्टिविटीज विल वेरी अकॉर्डिंग टू व्हाट? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं. आपका क्लाइंट है मैन्युफैक्चरर एंड आपका क्लाइंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. वेयर यू विल check its GST returns, where you will check its custom returns. So it means your audit planning changes according to the nature and size of the client. Am I correct? अभी यहाँ पे क्या लिखा है? Size and complexity of whose entities? Entities, activities, the number of products to be covered, processes and operations involved. Next one, the audit team members' previous experience with the entity and the what? Industry. Let's say for example, last year your another partner did the audit of Vizag and he, when you communicated with him, he told you यार waste management है, incompetent है, internal control system waste है, cameras are there installed but they are not at all working. Now tell me whether his experience helps you in doing current year audit. So you will be more strict or lenient this year. So read the second point. The audit team members' previous experience with the entity and the what? Industry. Next one. That I already told you. Your planning and strategy should be fixed or flexible. You'd never know what is waiting for you when you will enter the whose place? Client's place. ये सेम चीजें जो हमने पढ़ी है ना, उसको दोबारा से नीचे क्या किया हुआ है? रिपीट किया हुआ है. इसलिए पहले उन्होंने पूरे बोल्ड में डाल दिया, अब उसी बोल्ड को नीचे एक्सप्लेनेशन वे में डाल दिया. बट आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन अ प्रॉपर मैनर. टेल मी व्हाट आर द 2 knowledges, 5 knowledges you should have before making the overall strategy. Entity, its environment, internal control system, accounting system. अब ये देखो, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें वर्ड्स पढ़ाता हूं. ये वर्ड पढ़ो, ये क्या है? अंडर द विच एक्ट? कंपनीज एक्ट क्या है उसका? पेसल में से व्हाट इज कंपनीज एक्ट? इट्स अ विच एनवायरमेंट? लीगल एनवायरमेंट. मतलब कौन से लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल है. और मेरे को ये बताओ, अगर वाइजैक स्टील प्लांट लिस्टेड है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, सेबी भी एप्लीकेबल है? तो आपको सेबी की भी नॉलेज होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्लाइंट की तो नॉलेज मस्ट है. दैट इज द वन. सेकेंड थिंग, व्हाट इज दिस? मेरे को ये बताओ, इफ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ एयरटेल, which industry knowledge you should have? And if you are doing the audit of LIC, or if you are doing the audit of SBI, banking industry, so what industry to which your client belongs to, that knowledge also you should have. अब ये बताओ, ये इंटरनल है, ये भी एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल. अभी तक हम लोग क्लाइंट की नॉलेज में नहीं पहुंचे, अभी तक हम उसके इन्वायरमेंट की नॉलेज ले रहे हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? यूनिक फीचर्स ऑफ व्हाट? इंडस्ट्री. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? Reliance that can be placed on which auditor? Please tell me, cost audit and financial audit both are same or different? ध्यान से आंसर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, whether finance audit helps the cost auditor in some way? Yes or no? Yes. क्योंकि what weaknesses who has identified? Financial auditor will be the same weaknesses when you will do your which audit? Cost audit. So can you take the help of financial auditors or not? Yes. What is the next one? State of IT. What is IT? Information technology.
अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड ऑफ पी टू पी ऑपरेशन? पी टू पी क्या होता है? ओ टू सी पता है? ओ टू सी नहीं पता है सर? ये आपको कॉस्टिंग में पढ़ा होना चाहिए। पी टू पी होता है परचेज टू पेमेंट। व्हाट इज पी टू पी? कि परचेज से लेके पेमेंट तक क्या ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ पी टू पी में क्या होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, व्हाट इज आरओएल? रीऑर्डर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट डू यू डू एज अ स्टॉक मैनेजर व्हेन द इन्वेंट्री लेवल टचेस आरओएल? आप बताओ, आप क्या करना चाहो? सपोज यू आर अ स्टॉक मैनेजर, you will generate MRN. What is MRN? By the which department? Purchase department. Purchase department किसको इन्फॉर्म करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट टेंडर्स डिपार्टमेंट को इनवाइट करेगा। टेंडर्स डिपार्टमेंट विल प्लेस द वर्ड टेंडर्स। टेंडर्स में से अपन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? द बेस्ट वन। उसके बाद क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी ऑफ द गुड्स के बाद, अब ध्यान से सुनना, आई विल डू वन मिस्टेक, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। डिलीवरी के बाद व्हेन द गुड्स विल बी गिवन बाय द सप्लायर, यू विल सेंड इट टू द स्टॉक डिपार्टमेंट। स्टॉक डिपार्टमेंट से गुड्स जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में WIP एंड FG होगा। व्हाट इज FG? फिनिश गुड्स। उसके बाद आप उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करोगे। क्वालिटी इंस्पेक्शन अगर ओके हुआ तो आप इन्फॉर्म करोगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट रेज करेगा चेक। चेक दिया जाएगा सप्लायर को और सप्लायर पुट इट इन द बैंक एंड बैंक रिलीजेस व्हाट? पेमेंट। इसे बोलते हैं P2P ऑपरेशंस। हाँ, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि योर क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इज रॉन्गली प्लेस्ड। वेयर इट शुड हैपन, यहां पे होना चाहिए था। योर क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट शुड बी हियर, क्योंकि दैट सप्लायर हु गेव यू द रॉ मटेरियल विल नॉट टेक द फिनिश गुड्स इन रिटर्न। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप फिनिश गुड्स के बाद QI कर रहे हो, व्हेन यू शुड हैव डन द QI एट द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। तो इसका मतलब व्हाट आई एम एबल टू टेल टू माय क्लाइंट कि भैया दिस इज योर वीकनेस। आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये डिपार्टमेंट यहां से निकाल के यहां पे आना चाहिए। डिड यू गेट द पॉइंट? तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू इन द विच ऑडिट? इंटरनल ऑडिट। अब मैं तुम्हें बताता हूं यहां पे IT का रोल कहां है। ये पहले सब कुछ मैनुअल होता था। इट ऑल यूज टू हैपन व्हाट? मैनुअल। बट नाउ एवरी डिपार्टमेंट्स कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो इसका मतलब मेरे को MRN जनरेट करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक डिपार्टमेंट एक एस प्रिंट, ही विल प्रेस द एंटर, ऑटोमेटिकली द इंफॉर्मेशन विल गो टू द परचेज। परचेज डिपार्टमेंट MRN को एंटर करेगा, कहां पे जाएगा? अकाउंट्स। अकाउंट्स डिपार्टमेंट टेंडर वाले को। ये सब कुछ आजकल मैनुअल होता है, ऑटोमेटेड। इट मींस यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, ये अभी तक हम लोग सिर्फ इसका एनवायरनमेंट नॉलेज देख रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर योर कॉस्ट रिपोर्टिंग? 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल। बट मेरे को ये बताओ, व्हाट इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम? कुछ लिखा लॉ में कि यू विल बी पेनलाइज्ड और समथिंग? नो, आप ज्यादा टाइम भी ले सकते हो। स्टैट्यूटरी गाइडलाइन क्या बोलती है कि 180 days में कंप्लीट करो, और वो हो भी जाता है। 6 months आर मोर देन एनफ टू डू अ वन ऑडिट, बट you are not going to get one audit now. You will be getting multiple audits doing in those 6 months. For you it is 6 months only, but instead of one audit you might be doing 8 to 10 audits. So that creates a difference. After that you need more time. So yes, you can have, but you have to give the reasons in writing कि why you have taken more than how many days? 180 days. Next point क्या है? Timelines forward, board and audit committee meeting. How many of you know that? ये तो आपने किया हुआ है लॉ में। कितनी बोर्ड मीटिंग्स होती है इन ईयर? पक्का? इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 5। हाउ? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस रिमेनिंग 4 meetings इन अ कैलेंडर ईयर। अब मेरे को ये होता है, व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग्स? मैक्सिमम 120 days। मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? सेम रूल अप्लाई होता है इसकी मीटिंग्स को भी। कौन सी? और यू शुड हैव द नॉलेज और शुड नॉट हैव द नॉलेज? शुड हैव द नॉलेज, क्योंकि इसीलिए तो आपको कॉस्ट ऑडिट के पोर्शन में कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है, ताकि फ्यूचर में जब आप कॉस्ट ऑडिट करोगे एंड यू सॉ दैट कि वन बोर्ड मीटिंग हैपेंड ऑन 1st June एंड द सेकंड बोर्ड मीटिंग इज हैपनिंग ऑन 1st December, प्लीज टेल मी, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इज इट अ कंप्लायंस और वायलेशन? व्हाई? द गैप बिटवीन द टू शैल नॉट बी मोर देन। इसलिए बोल रहा हूं आपको सारी नॉलेज, दैट इज व्हाट AKOCB, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स। क्योंकि अगर क्लाइंट कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनी से भी एप्लीकेबल हो रहा है,
और अगर क्लाइंट लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर सेबी एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है. तो यू जस्ट अ कॉस्ट ऑडिटर डजंट मीन दैट यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट कॉस्टिंग. अदरवाइज तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट होता, कॉस्टिंग. Why you are doing law, why you are doing audit, why you are doing financial management, why you are doing CFR? Why? Because you have to be all rounder. You should have the knowledge of every discipline. What is the next point? Resources required and available in terms of what? Manpower, equipment, other, and assignment of these to the specific parts of the work. तो ये जो हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा है उसे नीचे इम्प्लीमेंटेशन वे में बताया गया. देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा विच इज टोल्ड बिलो. सो दैट ब्रिंग्स एन एंड टू योर विच स्टैंडर्ड 101, जिसमें हमने पूरा पढ़ा तीन चीजों के बारे में: प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम. दैट इज अ मेजर वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. मेक अ नोट, जल्दी लिखो. अब बताओ लिखवाऊं कैसे? शुड आई राइट एंड यू विल राइट, एंड और शुड आई डिक्टेट एंड यू विल राइट? डिक्टेट कर दूं, लिख लोगे? ओके, मेक अ नोट. क्योंकि मैं तुम्हारे नोट्स ले लूंगा ना फिर. आई विल टेक वन ऑफ योर नोट्स हुज हैंड राइटिंग इज सुपर्ब. एनीबडी हु हैज द बेस्ट हैंड राइटिंग इन द क्लास? कौन? राजशेखर कौन है? यू आर राजशेखर? शो आप? अच्छा, तुम हो राजशेखर. यू टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम वाइल राइटिंग, नहीं? डू यू यूज डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स ऑल्सो? स्टॉप यूजिंग इट, नॉट रिक्वायर्ड. एग्जामिनेशन में सिर्फ ब्लैक ही यूज करना है. बट फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, व्हेन यू वांट टू रीड, यू वांट डिफरेंट कलर्स टू कम. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी यूज करता था टिल इंटरमीडिएट लेवल. बट फाइनल में आई रियलाइज कि मोर इंपॉर्टेंट इज टू राइट द कंटेंट इंस्टेड. अम्मा, आई डिड नॉट गिव द ब्रेक. यू स्टार्टेड प्लेइंग पेंसिल पेंसिल. ले लो ले लो ले लो. हेल्प हर. व्हाट शी सेड? इट्स ओके. अच्छा अच्छा, ये बड़ी गंदी आदत है. मैंने एक जना मिस्टेक करता है, पूरी क्लाइंट के मुंह में सलाइवा आ जाता है. ये मतलब आदत है क्या अंदर, या मजे लेते हो? थोड़ा मतलब वो टेंशन को रिलीज करने का एक्टिविटी है ये, स्ट्रेस बस्टर. चलो, मेक अ नोट एवरीवन. पुट द हेडिंग कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स. कॉस्ट ऑडिटिंग and assurance standards. Under that, put the heading CAAS or SCA 101. CAAS or SCA 101. What is SCA? Standard on Cost Audit. So CAAS, or it is also known as SCA 101. Heading is planning. Heading is planning and audit of cost statements. Planning and audit of cost statements. Planning and audit of cost statement. This is the lengthiest one. Remaining are very small. ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली अपना कवर होता है. रिमेनिंग आर स्पेसिफिक वन. एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, एक सिर्फ और सिर्फ नॉलेज. एक्चुअली 104 वी आर ऑलरेडी गोइंग टू कवर इन 101. Just now I told you 7 factors, na? Corporate knowledge, Company Act knowledge, industry knowledge. That is nothing but call your 104. So 104 won't take that much of time to make you note. Point number 1. Put the heading. Point number 1. Planning is the preliminary step. Point number 1. Planning is the preliminary step. What an auditor. Planning is a preliminary step. What an auditor shall take before execution of his audit. Before execution of his audit. Before execution of his audit. Point number 2. It includes. Point number 2. It includes coordination with the auditee. It includes coordination. It includes coordination with the auditee. What is auditee? Client. Coordination with the auditee.
comma, thinking about resources, coordination with the auditee, comma, thinking about resources, thinking about resources, comma, deciding the scope, deciding the scope and audit procedures, deciding the scope and audit procedures to achieve audit objectives, to achieve audit objectives. Next point, objective of planning. Put the heading, objective of planning. Acha, why do we plan? Because of our T. What is T? Timely audit, efficient audit, effective audit. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो इसको ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. हेडिंग यू हैव रिटन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. टू डू ऑडिट, to do audit effectively, efficiently, most importantly, on timely basis. To do audit effectively, efficiently, and most importantly on timely basis. This is called objective of planning. To do audit effectively, efficiently, and most important on timely basis. Next, scope. Scope. Under that, right? Cost auditor's scope. Cost auditor's scope is. Cost auditor's scope is. Cost auditor's scope is cost statements. मतलब what you have to cover? Cost statements, cost records. Cost auditor's scope is cost statement, cost records, related cost documents, related cost documents, strategy, and audit plan. So planning includes 5 scopes: your cost statements, your cost records, related cost documents, strategy, and audit plan. Right? Next point, definitions. Definitions. Audit. First definition is audit. Under that, right, I will make you write in a simplified way. An independent and systematic examination. An independent and systematic examination of financial and cost information. An independent and systematic examination of financial and cost information. Financial and cost information, whether profit oriented or not. Whether, एक second, what did I write? Sir, just send. An independent and systematic examination of financial of entity, whether profit oriented or not. Now you can write, just you have to insert of entity, whether प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. मतलब वो चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो या नॉन सेक्शन है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या लॉस मेकिंग, कॉमा, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, कॉमा, irrespective of its size, nature and structure. Irrespective of its size, nature and structure. Size, nature and structure. With only objective, irrespective of its size, nature and structure, with only objective, what do we give?
guarantee or express an opinion with only objective of expressing an opinion. अब ये पूरा सेंटेंस एक बार रीड आउट करना. With only objective of expressing an opinion. Read out the whole sentence. It is an independent and systematic examination of financial and cost information of an entity, चाहे वो entity profit oriented हो या not, irrespective of its size, nature and structure, with only objective is to express an opinion. Second one, audit partner. Audit partner. Under that, right? A point. The one who is a member of institute holding full-time COP. The one who is a member of institute. Is it looking easier now, the language? The one who is a member of institute holding full-time COP. But do you remember yesterday I told you can hold part-time or एक और है CCOP also. But in that case you can't provide the auditing services. आप MCC company खोल सकते हो. Management Consultancy Company. ठीक है? But that you should not write. Just simply write member of the institute holding full-time COP, Certificate of Practice. Second point, responsible for audit and its performance. क्योंकि when you write something in bullet points ना, it becomes easier for you to understand. Who is a member, and second point is responsible for audit and its what? Performance. Next one. And its performance. Responsible for the audit and its performance. C point. Issues report on the behalf of firm. Acha, please tell me what comes under signature. Do you write for Rohit Grover or do you write for Grover and Associates? हम लोग कभी भी ऑडिट रिपोर्ट अपने नाम पे इशू नहीं करते. We always issue the audit report on the name of firm. So that is what C point. Issues the report on behalf of firm. And D. Having appropriate authority. Having on the behalf of the firm. D point. Next point. Having appropriate authority from regulatory bodies. Having appropriate authority from regulatory bodies. Now if you'll merge these A, B, C, D, you will get the definition of the partner. Ab batao, what is the definition of the audit partner? The one who is a member of institute holding a full-time certificate of practice, responsible for his audit and performance, issues the report on the behalf of his firm, having an appropriate authority from the regulatory body. Simple. तो हमने क्या किया, instead of 4 lines, I divided it into 4 points. That will be more easier for you to retain. Next heading, audit plan. Audit plan. It's a record of, under that, it's a record of planned wraps. It's a record of planned wraps and planned faps. It's a record of planned wraps. Wraps का बाद में अपन full form डालेंगे. Planned wraps पहले लिख लो, कैपिटल में लिखना. Planned wraps and planned faps in response to the risks identified. In response to the risks identified. मतलब जो भी आपको रिस्क दिखे उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए what are your wraps and what are your faps. When you make a record of that, that is called what? Audit plan. So read what is audit plan again. It's a record of your planned wraps and planned faps in response to the risks identified. जो आपको रिस्क दिखे उनको रिड्यूस करने के लिए आपने क्या रैप्स करने हैं, क्या फैप्स करने हैं, उसका जब आप रिकॉर्ड बना लेते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑडिट प्रोग्राम. क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज. नेक्स्ट वन, ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क ये वाला मैं तुम्हें लिखवाता हूं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है पॉइंट. ऑडिट रिस्क में अंडर दैट लिखो पॉइंट नंबर 1, इट इज एन एक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. It is an act of cost auditor giving wrong
or inappropriate opinion, giving wrong or inappropriate opinion when cost statements were materially misstated. I hope you remember I told you yesterday कि audit risk is not only the auditor's risk. It is a mix of two people, management and auditor. जबकि मैनेजमेंट का रिस्क होता है IR इंटू CR, इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क, और ऑडिटर का रिस्क होता है DR, डिटेक्शन रिस्क, और दोनों में रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स। IR CR ज्यादा होगा तो हमारा सैंपल साइज भी ज्यादा होगा, कवरेज भी क्या होगी? मोर होगी, तो नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स विल बी लेस, तो DR क्या हो जाएगा? लेस। बट इफ द IR इंटू CR इज व्हाट? लेस, my sample size will also be less, coverage will be less, तो non detection risk will be higher. तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? It's an act. Sometimes the cost auditor may give a which opinion? Wrong or inappropriate, when whereas the cost statements were materially misstated. कई बार हम लोग wrong opinion देते हैं, right? Next point, point number 2. Therefore, audit risk is a function of ROMM into detection risk. Audit risk is a function of ROMM into detection risk. Whereas ROMM is due to irresponsible management activities. ROMM is due to irresponsible management activities, which brings IR and CR. Therefore, AR is equal to IR into CR into DR. इन दोनों को हमेशा ब्रैकेट में रखना, रीजन बीइंग ये दोनों कंबाइंड वे में असेस होते हैं क्योंकि दे बोथ आर कनेक्टेड विद ICS. वन इज ड्यू टू नो ICS एंड वन इज ड्यू टू पुअर ICS. डू यू रिमेंबर दैट? और ICS किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की. तो जब मैनेजमेंट इररेस्पॉन्सिबल है और थोड़ा बहुत ऑडिटर भी इररेस्पॉन्सिबल हो गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो विच रिस्क केम? ऑडिट रिस्क. तो AR इज इक्वल टू IR इंटू CR इंटू व्हाट? DR. थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे अपन? इनका रिलेशनशिप. पहले एक काम करते हैं, थर्ड में अपन तीनों को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज IR, व्हाट इज CR एंड व्हाट इज DR. IR is misstatements which will occur due to no ICS. Correct? That is IR. CR is misstatements which occurs due to poor ICS. And what is DR? Those misstatements not detected by auditor, those misstatements which are not detected by the auditor due to poor pets. Due to the poor pets. Poor pets means poor procedures. At E means evidences and T means techniques. ऑडिटर ने गलत प्रोसीजर चूज करे, गलत एविडेंस कलेक्ट किया, गलत टेक्निक्स चूज करी. दैट्स द रीजन ही वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट द misstatements. Those misstatements not detected by an auditor due to poor PETs. PET stands for poor procedures, poor evidences and poor techniques. Clear? So that is the reason what comes? Audit risk. And we end up giving the which opinion? Wrong opinion. But it is again not only auditor's fault. It is auditors plus management. 3 point हो गए? Everyone noted this point as well?
Not detected by the auditor due to poor pets, procedures, evidences, and techniques. ठीक है. Fourth point, last point. Fourth point, there is inverse relationship. There is inverse relationship between whom and whom? Between IR into CR with DR. ठीक है. अब इसको एक्सप्लेनेशन एक ही करना हो, बाकी मैं वाइस वर्सा लिख देना. हायर द IR into CR means higher sample size means more coverage, which means less DR, or vice versa. Higher the IR into CR means higher will be the sample size, means more the coverage, means less the detection risk, or vice versa. So that's how there is a which relationship? Inverse relationship between IR and CR. Correct? है? Done? And please tell me, what is the definition of misstatement I told you yesterday? What you should have done? The difference between what you should have done and what you have done. If there is any variance between the two, that is either due to fraud or due to error. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिस. आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या किया. अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स देयर इज नाइदर एनी फ्रॉड नॉर एनी एरर. बट अगर दोनों में डिफरेंस है, तो इट मीन्स आइदर इट इज ड्यू टू फ्रॉड or due to error. One is intentional, one is unintentional. Now write the next topic. Audit team. Put the heading audit team. इसमें लिखो it includes audit team includes A point, engagement partner. इसके ब्रैकेट में लिख लो main lead, LEAD, because he is the main person. Engagement partner. Second, audit manager. Third, paid assistants. Fourth, senior and junior article assistants. Fourth is senior and junior article assistants. And fifth, employees. This is what your audit team is all about. And who is auditee? The client. Now write auditee, the client on which cost audit is conducted. Auditee, the client on which cost audit is conducted. The client on which cost audit is conducted. Who is a firm? What are the three types of firms you can make in India? Sole proprietor. ये हमने already cost audit में cover किया हुआ है. Then what do you mean by initial audit? If the client is getting audited for the first time or client is getting audited for the first time by a new auditor, both the points are covered under what? Initial audit. Either you are getting audited for the first time, that is also initial audit, or you are getting audited by the new auditor for the first time, that is called also what? Initial audit. Put the heading initial audit. Initial audit under that A point. Entity getting audited for the first time. Entity getting audited for the first time. And B point. Entity getting audited by a different auditor for the first time. Entity getting audited for the first time. Entity getting audited by different auditor for the first time. Both are the definitions of initial audit. Correct?
फिर आ गया मिस स्टेटमेंट, पुट द हेडिंग मिस स्टेटमेंट। ये पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं, दीज डेफिनेशंस यू हैव टू बी वेरी मच परफेक्ट। मिस स्टेटमेंट, नाउ राइट difference between the difference between applicable and required ABCDs। बाद में मैं तुम्हें ABCD के definition I'll make you right। difference between the applicable and required ABCDs and the actual ABCDs, the actual ABCDs of an entity, actual ABCDs of an entity is known as misstatement, is known as misstatement, is known as misstatement, which is either due to fraud, which is either due to fraud, which is either due to fraud or due to misstatement। या तो वो फ्रॉड के कारण होती है, ओ सॉरी, आइदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। ठीक है, अब लिखो नीचे नोट लिख के एबीसीडी इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने एबीसीडी यस्टरडे, अकाउंट्स, बैलेंसेस, क्लासिफिकेशंस, डिस्क्लोजर्स। आपने रॉन्ग अकाउंट्स शो किए, रॉन्ग बैलेंसेस शो करे, रॉन्ग क्लासिफिकेशन शो करी या रॉन्ग डिस्क्लोजर शो करे, उसके कारण मिस स्टेटमेंट होता है। राइट और नॉट? एबीसीडी मींस अकाउंट्स, बैलेंसेस, क्लासिफिकेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। अब ये जो वर्ड्स है आप उसमें फिट करो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में। द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा है मैंने, एप्लीकेबल एंड रिक्वायर्ड एबीसीडीज एंड actual ABCDs which are either due to fraud or error is known as what? Misstatement। जो required थे और जो actual हुए। actual balance, जैसे से फॉर एग्जांपल आप मेरे को ये बताओ, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में आता है या फैक्ट्री कॉस्ट में आता है? प्राइम कॉस्ट में, लेकिन आपने उसको गलती से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड्स में डाल दिया। अब मेरे को बताओ व्हाट इज रिक्वायर्ड प्राइम कॉस्ट, व्हाट यू हैव डन, इज इट अ मिस स्टेटमेंट? Yes, which is either an error or fraud, उसे बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? ठीक है, पुट द हेडिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। टुमारो नहीं भाई, आज ही, आज मैं ऑलरेडी हाफ एन आवर लॉस्ट हो गया। पुट द हेडिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। डोंट वरी, 5 मिनट एग्जैक्टली 1:15 को छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अच्छा ये बताओ, इफ प्लानिंग हेल्प्स यू इन टी, स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू इन एसटीडी? स्कोप, टाइमिंग एंड, ऐसे रिमेंबर करना है। अदरवाइज अगर आप ये कीवर्ड्स रिमेंबर नहीं करोगे ना, इट विल बी वेरी मच कंफ्यूजिंग व्हाइल राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन। तो प्लानिंग लिखते ही रैप्स, फैप्स एंड टी समझ में आना चाहिए, और स्ट्रैटेजी लिखते ही एसटीडी, एसटीडी ऑफ योर व्हाट, रिसोर्सेज, स्कोप ऑफ योर रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ योर रिसोर्सेज, डायरेक्शन ऑफ योर रिसोर्सेज। तो पुट द हेडिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन scope, timing and direction of audit। It helps in scope, timing and direction of audit, scope, timing and direction of audit। Next definition, risk assessment। अब बताओ, if you want to identify and assess your client's risk, what are the 5 knowledges you should have? उसका environment, entity, internal control, accounting, bookkeeping। All right, risk assessment, it includes acquiring the knowledge of, it includes acquiring the knowledge of entity, it includes acquiring the knowledge of entity, comma, its environment, entity, comma, its environment, comma, its ICS, comma, its bookkeeping system, comma,
sorry, and its accounting system. To identify and its accounting system to identify and assess the ROMM. To identify and assess ASSESS, assess the ROMM. करेक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट. दैट्स इट. रिमेनिंग अपन कल लिख लेंगे. अनदर 10 minutes it is required and then we'll shift to our new standard that is called what? Audit. ये रहा. किधर गया? हाँ, cost audit documentation. Here I will make you write that 10 years वाला point, 2 types of file, permanent working file, temporary file. ठीक है, चलो see you guys tomorrow. कल मिलते हैं.